Good evening, everyone, and a very warm welcome at Motherhood Club. Myself, Ekta Sehgal Malhotra, Chief Strategy Officer and founder Motherhood Club, and with me is Ila Pachauri, Chief Happiness Officer Motherhood Club. Hi, Ila, how are you doing? I'm doing great. Excellent. Good to hear that. And let's wait for a few friends to join in, and then we shall share the reason as to why we are live today. So let's wait. Let's invite a few friends, Yes, let's do and that. And let's in the see. meanwhile, six members have already, guests have already joined in. So Yes, that's I a can very see. encouraging sign. Yes, Let's absolutely, welcome them all. absolutely. So very warm welcome to all of you who have joined us at the Motherhood Club session for today. Today we are delighted to share a new initiative of ours, an initiative which has been playing on our mind for a long time. And it takes us back, I won't say to our young days because we are young, but it definitely takes us back to our childhood days where each one of us was encouraged to read books. As a child, our parents bought gifts, and these were books so that we could enhance our knowledge, our expression, our thoughts, and are able to articulate anything that we wish to communicate. A book can be a book of knowledge, can be a book of emotions, a book of poetry, or anything that we like. I remember reading two books in a day, even during my post graduation time, and would never leave a book until I finished reading it. But gradually, as one got caught up in life, reading books got left behind and came in reading on the mobile or on the laptop. But Ila, reading a book literally in your hand, isn't that a beautiful experience? The feel of the paper on your fingers, the sound, the rustling sound when you turn the pages, and the smell of newspaper and the print. It is totally unmatched. No feeling can be compared to this feeling of having a book in your hand and making that inroad journey into the book, being one with the characters. Absolutely. Many a times, a book that we read touches a chord with us. Many a times, we are going through something, and the book is actually a mirror of that. And that definitely is not just a coincidence, but you are destined to have that book in your hand. So, what are we trying to do at Motherhood Club? I will explain it in English. Anila, please do the honors in Hindi. बिल्कुल. Every month, on the last Wednesday of that particular month, we would be doing a book reading session in pairs. Two of us will come together, do a book reading session on the same book, share their thoughts, their emotions, a few lines from that book, the experts from that, and share why did they like the book, why did they choose the book, and what did they learn from that book. The choice of the book would be left to the presenters, and you would have about 35 to 45 minutes or a maximum of an hour to read the book, explain the book, share your emotions around that book. This is what is going to be the book reading session at Motherhood Club. Today is going to be our maiden episode. But before we get on to the book reading and all about that book, let Ila explain the concept in Hindi. Ila, over to you. जैसा एकता ने बोला कि ज़िंदगी की आपाधापी में और डेफिनेटली टाइम कम है और अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी के टूल्स आ गए हैं कि हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, जिस पे हम किताबें पढ़ सकते हैं। कहीं न कहीं जो किताबें पढ़ने की परंपरा है, वो पीछे छूटती जा रही है और हम में से स्पेशली हम लोगों के एज ग्रुप के जितने लोग हैं, वो डेफिनेटली मिस करते होंगे किताबें।
लेकिन एक अच्छी बात और देखने को मिल रही है कि पिछले 5 सालों में मैंने जितनी किताबें पब्लिश होते हुए नहीं देखी थी, वो अभी इन 2 सालों में देखी हैं। चाहे वो स्टोरीज की एंथोलॉजीज हो, पोएट्री एंथोलॉजीज हो, सेल्फ रिटन बुक्स हो, सिंगल ऑथर की हो, को ऑथर्ड हो, बुक्स तो पब्लिश हो रही हैं। उन्हें कौन पढ़ रहा है? हम क्यों नहीं पढ़ रहे? मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ गर्मियों की छुट्टियों के दिन, जब आप सब किताबें पढ़ते थे, कि थोड़ा सा टाइम फ्री हुआ और हम किताबें पढ़ने बैठ गए। मेरा ये हाल था कि एक बोर्ड एग्जाम से दूसरे बोर्ड एग्जाम के बीच में अगर 2 दिन का गैप है, उसमें भी मैं मम्मा पापा से इजाजत लेके कोई एक छोटी सी किताब लेके बैठ जाती थी, कि पापा मम्मी भी कहते थे हाँ इससे तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। तो इतनी बड़ी दुनिया है पढ़ने की। तो एकता ने, मैंने, पूजा और मोनिका ने सोचा क्यों ना ये जो है एक्टिविटी री इनिशिएट की जाए। आप सब लोग किताबों से दोबारा से दोस्ती कीजिए, एक रिश्ता बनाइए। और ये हमारी एक नई पहल है मदरहुड क्लब पर, जिसमें आज पहली बार एकता और मैं आए हैं अपनी एक चुनी हुई किताब लेकर आपके सामने। इसमें से हम कुछ हिस्से आपको पढ़ के सुनाएंगे, क्यों हमने ये किताब चुनी इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरीके से हर महीने के आखिरी बुधवार को हम लोग एक एक बुक रीडिंग सेशन किया करेंगे, लेकिन हर बार मैं और एकता नहीं आएंगे। जितने भी आप मेंबर्स हैं हमारे से जुड़े हुए, कोई भी आप अपने दोस्त को चुनिए, उनको बोलिए कि मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, क्या आप ये पढ़ना चाहेंगे? कोई भी एक किताब आप दोनों मिलकर चुनिए, उसको पढ़िए और उसके बाद आइए लास्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ हमें पहले से बताकर रखिए दैट यस वी वांट टू कम लाइव एंड डू द बुक रीडिंग सेशन। सो शेयर योर थॉट्स, बिकॉज देखिए, किताब जो लिखी जाती है या कोई आर्टिकल भी लिखा जाता है, उसको पढ़ने का, उसको अब्जॉर्ब करने का, उसको परसीव करने का सबका एक अलग तरीका होता है। कुछ चीजें मेरे दिल को छुई हैं इस किताब में, कुछ चीजें एकता के दिल को छुई हैं। कहीं एकता ने अपना एनालिटिकल माइंड लगाया, मैंने कहीं अपना इमोशनल एंगल जोड़ा। इस तरीके से हमने जब इस किताब के ऊपर बात करनी स्टार्ट की, तभी हमें ये लगा कि हमें ये किताब लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और ये जो किताब आ रही है, ये बिल्कुल दिल से लिखी हुई किताब है। हमारी अपनी ही मेंबर हैं मंजीत राजवीर जी। वैसे उसमें ऑथर का नाम नीतिबा बब्बर है। उनका फेसबुक की जो आईडी है वो मंजीत राजवीर जी के नाम से है। और उन्होंने इस किताब में वही लिखा है जो उन्होंने जिया है। तो शुरू करें एकता किताब के बारे में। जी, जी स्टार्ट, बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट। एंड बुक से पहले इला 1-2 मिनट का समय लूंगी। आई एम सो overwhelmed to see that so many of you have joined us and so many of you are resonating with that thought. स्नेह जी कह रही हैं कि आजकल बच्चे किताब नहीं पढ़ते, पेरेंट्स उन्हें किताबें देते ही नहीं है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं और शायद कहीं ना कहीं आई फील अ वेरी प्राउड मदर कि मैंने अपनी बेटी को 3 महीने की उम्र से किताबों से दोस्ती करना सिखा दिया था और आज ये हाल है कि वो बच्ची को जब फ्री टाइम मिलता है वो अपनी किताब उठा के पढ़ती है एंड एट द एज ऑफ 5 she reads absolutely fluent. रीपा कह रही है कि उन्हें बहुत खुशी है कि ये इनिशिएटिव लिया गया क्योंकि वो एक लाइब्रेरियन टीचर रह चुकी हैं एक इंटरनेशनल स्कूल में और बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। बट ज़्यादा समय ना लेते हुए, जैसा कि इला ने बोला, आज की जो किताब है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बैक टू लाइफ बाय नितिमा बब्बर। बहुत लोग उन्हें मंजीत बब्बर के नाम से जानते हैं। वो एक बहुत अच्छी पोएट्रेस हैं और पोइट्री को वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि वो उसे एक नए मुकाम पे लेके जाएं बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पोएट्स इन द फॉर्म ऑफ एन एंथोलॉजी। और किसी एक एंथोलॉजी में ईला और मैंने दोनों ने पार्टिसिपेट किया था जहां उन्होंने एज अ टोकन ऑफ जेस्चर अपनी ये बुक बैक टू लाइफ हमें भेजी। बहुत समय हो गया था, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा चलिए इस किताब को पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड मंजीत जी के बारे में मैं जानती थी।
जब मैंने ये किताब उठाई और इसे पढ़ना शुरू किया रात के 12 बजे, आई कुड नॉट लीव दिस बुक until 2 a.m. And I left it at 2 a.m. because I had goosebumps and I just couldn't handle it beyond that. और फिर मैंने ईला को बोला, क्योंकि वो उस टाइम हॉलिडे पे गई हुई थी अपने पेरेंट्स के पास, तो मैंने उनसे बोला कि आप प्लीज जैसे ही वापस आएंगी इस किताब को पढ़िए। तो ईला, जब आपने पढ़ी किताब या पढ़नी शुरू की, आपके इनिशियल रिएक्शंस क्या थे? जैसा एक था आपने बोला था कि इसको अगर आप हाथ में लोगे तो इसे रख नहीं पाओगे, मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। इतनी ज़्यादा मैं इमोशनल हुई इस बुक को पढ़ के। न जाने मैंने मंजीत जी के साथ में वो सारे दुख साझा किए जाने अनजाने में, जो उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किए। उनकी जीत मुझे अपनी जीत लगी, उनका दुख मुझे अपना दुख लगा। इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने ये बुक लिखी है और मैंने इसको एक ही सिटिंग में ख़त्म किया। जब मैंने इसको सेकेंड टाइम उठाया टू रीड द लास्ट फ्यू पेजेस, आई हैड टीयर्स इन माई आईज। Absolutely. Now, why that was, what is this book all about? Let's tell you about that. The book is written for her children, Lovedeep and Shivansh. The reason for my being alive, the very cause of my fight with him, and the destination of my journey. The book is about her struggle, about her belief in the Almighty, her conversations with the Almighty at every stage of her life, at every struggle that she experienced from the time she took birth. A premature baby to lovely parents, the firstborn of a family in Punjab, favorite of her grandmother. Being a girl in those times, lived a life of a princess. Eventually, got married to the man of her father's choice, who she thought at that time, who chooses the husband or the wife in this time? But she said, if it's my father who has chosen him, he perhaps would be the right man. And indeed, he was the man who fought with her, who still is, who supports her, who finds her beautiful in any and every form, and not because she is beautiful at the exterior, but because she is beautiful as a soul, as a human being. What do you have to say, Ila? नॉट ओनली दैट, वो अंदर से सुंदर है, लेकिन साथ में वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। और जो उनकी परमात्मा में जो उनकी फेथ है, वो उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। इस बात को उन्होंने इस किताब में भरपूर तरीके से समझाया है कि यदि अपना फेथ, अपना कन्विक्शन आप 100% रखेंगे, तो परमात्मा आपको कितनी भी बड़ी मुसीबत दे, वो ही आपका हाथ पकड़ के उसमें से निकालेंगे। और मंजीत जी नहीं, मैं भी इस बात की साक्षी हूँ कि कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें मेरी लाइफ में आई, सिर्फ जो एक फिल्म मुझे याद आती है, जिस थ्री इडियट्स, जिसमें वो बार बार कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो जब हम अपने अंदर ये दोहराते रहते हैं, और इसमें इन्होंने पूरी किताब में सिर्फ ईश्वर से बातें की हैं, उन्हें लड़ी हैं उनसे, उनको ताने भी दिए हैं, उनका कुछ मजाक भी उड़ाया है, मिन्नतें भी की हैं, लेकिन उन्होंने ईश्वर पे से अपना भरोसा नहीं उठाया। यही कारण था कि इस भरोसे की वजह से, अपने बच्चों के प्रति प्यार की वजह से, और अपने हस्बैंड के अडिग विश्वास और सपोर्ट की वजह से, वो कैंसर जैसी
खतरनाक बीमारी से निकल कर आई। एक हंसता खेलता परिवार, जैसा कि सबका होता है कि स्टार्ट करते हैं शुरू से। हम थोड़ा सा इसकी स्टोरी का बैकग्राउंड दे देते हैं कि एक फैमिली जो कि अभी छोटे छोटे बच्चों की फैमिली है, छोटे बच्चे हैं। एक महिला जो कि ऑफिस से लोन लेकर अपना घर बना रही है, उस शहर में शिफ्ट होने वाली है। अचानक से उसके ऊपर ये बिजली गिरती है, उसे ये बताया जाता है कि तुम्हें कैंसर है, वो भी जबान का। जबान का कैंसर भी एक ऐसी इंसान को जिन्होंने जिंदगी में कभी तंबाकू नहीं खाया, पान नहीं खाया, सिगरेट बीड़ी नहीं पी। कितनी बड़ी बिजली गिरी होगी उनके ऊपर, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। उसके बाद की यात्रा इस किताब में उन्होंने बखूबी साझा की है सबके साथ। ओवर टू यू एकता। Back to life. What does the author, Neetima Babbar, says? One fine day, I found I had cancer, the deadly disease that would take me away from all the worldly gifts that he has given me. I fought back. I fought with him. Maybe this too was his will. I still bowed to his wish, but fight I did. But to admit the truth, I was a little apprehensive this time in asking him. At this time, I was asking him to change his own plans. If it were any different from mine, I was trying my utter best to convince him. Him with all my might as to why I had to live. I did not want to die. I will not quit, not at this moment of my life. He must bring me back to life. जैसा कि इला ने बोला, she had cancer of the tongue. Cancer of the tongue to someone who doesn't consume any kind of cigarette, drugs, or anything. And who could imagine that the cancer of the tongue would be so deadly that it would shake her up, her entire family, and she would also lose her voice. But as Ela said, and I also said, she always was in conversation with God. And when she was in conversation with the Almighty, do you think she could have ever lost her voice? Over to you, Ela. A few lines that, and there are actually just three lines in the beginning of the book that touched my heart. Granted, we are puppets in his hands, but for once, I refuse to dance to his tune. Today, I wanted to choose my own song, the song of life. जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हम कहते हैं जैसी परमात्मा की इच्छा, दिस इज गॉड्स विल। बट फॉर अ चेंज समटाइम्स वी शुड नॉट एक्सेप्ट गॉड्स विल। We can design our own lives with our sheer willpower and faith. So this is what I loved about this book. शुरू में, उसके बाद में जो एक डेंटल जो सर्जन थे, उनकी नेग्लिजेंस से उनका ये एक मामूली सा छाला जो जबान पर था, कैंसर में तब्दील हो गया। और जब तक वो इस चीज़ को रियलाइज करती, उनके चेकअप्स होते, जब तक उनका इलाज शुरू होता, वो स्टेज 3 पे पहुंच गया था। एकता, एक बड़ी अजीब सी बात हुई जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी। अभी कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत खराब थी, वायरल था, तो मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स लिखे थे। 7 दिनों तक मैंने एंटीबायोटिक्स खाए, उसके फलस्वरूप पेट में गर्मी हुई और मेरी जबान पर लेफ्ट साइड में एक छाला हुआ। और वो छाला 1.5 दिन तक मुझे परेशान कर रहा था, दांतों से टच करके वो वापस हरा हो जा रहा था। ऐसे मैं मंजीत जी की किताब में पढ़ रही हूँ, जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस से
वो छाला जो था कैंसर में तब्दील हुआ। मैं इतना डर गई, मैं इतना डर गई, कहीं मुझे भी तो नहीं हो गया। फिर मुझे लगा, अगर एक मंजीत जी इस खतरनाक बीमारी से जीत सकती हैं अपनी स्ट्रेंथ, विल पावर से और बिलीफ से, भगवान में विश्वास से, तो मैं क्यों नहीं। और हो सकता है ना हो कुछ भी। मैंने उसी टाइम उस चीज़ को निग्लेक्ट करने की जगह दवा ली। मैं 2 दिन में ठीक हो गई। लेकिन इस किताब ने मुझे एक चीज़ और सिखाई, कि कभी भी खुद को निग्लेक्ट मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ा लेसन मुझे मिला। हम लोग जो है काम की व्यस्तता, बच्चों को संभालना, इन लॉज को देखना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, मीटिंग्स, बिजी टाइमलाइंस, इसके चलते कई बार अपनी छोटी सी बीमारी को बड़ा कर लेते हैं। अगर डॉक्टर्स की सलाह से आप कन्विंस नहीं हैं, तो हमें दूसरा ओपिनियन लेने से नहीं झिझकना चाहिए। तो हम, जिसको कहते हैं निप इट इन द बड, उस बीमारी को हम शुरू में ही कंट्रोल कर सकते हैं। एकता, आपका और Yes, कोई पसंदीदा इसमें चैप्टर या लाइंस? yes. When I was reading this book, and every time Neetima, as called as Manjeet, spoke about the negligence of the doctors, I was reminded of my journey of seeing doctors when my father was unwell. Many a times, doctors are great humans, but many a times, unfortunately, the patient and the attendant becomes a puppet in their hands. In every session that Dr. Indu Bansal has hosted, conducted at Motherhood Club, she has repeatedly said the patient and the attendant have a right to know it all. The patient has to be in the center of everything. But when Manjeet ji or Nitima ji went to the very first oncologist, the first statement that was told to her, it's late. She questioned, what do you mean it's late? He asked her to step out and he would only speak to her husband. She insisted that no, I would want to be here, but he yet insisted that she steps out. She did, but she was furious. And why shouldn't she be? Negligence, not once, but many times, happened across the board. Inhuman approach, but at the same time, there was a big, big saving grace. Her surgeon. Where did the surgeon come from? Her treatment started with the surgery of the tongue, which means the tongue had to be cut. While the tongue was cut, it had to be replaced by another flesh, which would be taken from the area of the breast. In a very humorous, in a very comic way, Nitima has explained the correlation between the tongue and the breast. But imagine somebody tells you calmly, ज्यादा कुछ नहीं, हम आपकी जबान काटेंगे और उसकी जगह दूसरी लगा देंगे, और जब हम ये करेंगे, only and only 30% are the chances for you to not talk, but of survival. Yes, you hear it right. 30% chance of survival. Does one have a choice? Well, yes, one does. करे कि नहीं करे, 30% का ही तो चांस है. बट नितिमा जी ने बोला, bring it on. If it is 30%, so be it. I am sure it will be 100%. मैं वर्बिटम नहीं पढ़ूंगी उसको, because I would want each one of you to actually buy this book and read it. Because by reading this book, not only will it encourage you, give you hope, which we did when we spoke on World Cancer Day through our poetry with the theme hope. This book
is a is full of hope that one can fight. आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। आपके जो इमोशंस हैं उसको एक्सपीरियंस कीजिए, और जो आपका है उसको हक से मांगिए। डोंट प्लीड, डोंट बेग, डिमांड, and be in conversation with God, because there is a book, in fact, called In Conversation with God. It's over three series, in which it says that 70% is as per Him, but He does give you that 30% free will, and it is that 30% that Nitima ji said, I will make this 100%. Absolutely. सर्जरी हो गई उनकी, बट इट wasn't easy. और जब उनकी सर्जरी हुई तो उनके जो डॉक्टर हैं, जिनको उन्होंने वर्ल्ड कैंसर डे के दिन अपना एक ट्रिब्यूट भी प्रेजेंट किया था, विच आई हैड द ऑनर टू रीड इट फॉर डॉक्टर देव फ्रॉम एम्स. What a beautiful tribute. And she refers to Dr. Dev as her Lord Shiva. बिल्कुल। Ila. एक चीज़ और जो हमें सिखाती है ये किताब, कि अपनी लाइफ से ह्यूमर को, हास्य को न निकलने दें। कितनी भी मुश्किल आ जाए, हंसी आपके चेहरे से और आपके दिल से नहीं निकलनी चाहिए। हर सिचुएशन में हास्य को ढूंढना, ह्यूमर को ढूंढना मंजीत जी की खासियत है। इतनी जगह, ये मत समझिए कि ये बैक टू लाइफ है, कैंसर के बारे में किताब है, तो इसमें सिर्फ उनका दर्द, उनकी पीड़ा ही उनकी यात्रा का हिस्सा बनी। इस किताब ने मुझे इसलिए भी छुआ क्योंकि मैं भी बहुत, मुझे हर बात पे हंसी आती है, और इसमें उन्होंने ह्यूमर को इतना ब्यूटीफुली यूज किया है, सो ब्यूटीफुली दैट आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू। फिर वही बात है कि हम आपको सब पढ़ के सुनाएंगे तो आप प्रेरित नहीं होंगे इसको खरीदने के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि सब लोग ये छोटी किताबें, हमें शुरुआत किससे करनी है? छोटी छोटी किताबों से, जिससे कि हम वापस उस आदत की तरफ लौटें जो हमारे बचपन में या कॉलेज डेज तक हमारे साथ थी, पढ़ने की आदत। छोटी छोटी किताबें उठानी है। यहाँ पे मैं कुछ लाइंस पढ़ना चाहती हूँ। मंजीत जी का कहना है इस किताब में कि वो बहुत इजीली स्माइल करती थी, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान थिरकती रहती थी, लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि आपको कैंसर है और आप अपनी जबान लूज कर सकती हैं, आप शायद कभी बोल नहीं पाएंगी, तो उस टाइम उनके हस्बैंड दीपक, जो उनके सबसे बड़े सपोर्ट, एक रॉक की तरह उनके साथ थे, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट ही शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे को विश्वास दे रही थी, हाँ हम ये जंग जीत लेंगे। इसके बाद में इन्होंने स्माइल को कैसे एनालाइज किया है, ये मैं यहाँ पढ़ के सुनाती हूँ। स्माइल, what a small word with miles of meaning in it. छोटा सा शब्द, बहुत बड़े मायने। Now as I know that people can have stupid smiles at will. कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जब कुछ समझ नहीं आता कि अब हमें करना क्या है, हम ऐसे मूर्खता से हंस देते हैं। कुछ होता है, कई बार हम जेन्युइनली हंसते हैं और कभी कभी हम एक लाचारी वाली मुस्कुराहट भी देते हैं या एक मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट भी देते हैं। तो now I know that people can have stupid smiles as well. I had it that day after listening to the doctor. It was a fixed stupid smile. जबरन चेपी हुई मुस्कुराहट थी वो। No, not simple blank smile. I was learning. I was learning to smile in more than one way that I was used to. मेरे हस्बैंड एक बार बीमार पड़ गए थे और उनको भी स्पीच इशू हुआ था। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जिस तरीके से हमारे को देख के मुस्कुराते थे, बिकॉज ही कुड नॉट स्पीक, वो स्माइल मुझे अंदर से मारती थी, क्योंकि वो उस स्माइल के जरिए मुझे और मेरी बेटी को आश्वस्ति देना चाहते थे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई थी जो बहुत लंबी चलने वाली थी।
और मैं उसके आंसर में, उनकी स्माइल के आंसर में बहुत ब्राइट स्माइल उनको देती थी, उनको डबल अश्योरेंस देने के लिए। तो ये जो मुस्कुराहटों का जो आदान प्रदान है, द एक्सचेंज ऑफ स्माइल्स, इट इज मोस्ट important, it speaks louder than words and actions. Over to you, Ekta. Absolutely. Absolutely. And I think when you keep the environment happy, no matter what the situation is, you will sail through it. And I have experienced this firsthand with a with the head of the family in coma for 7 years. And anyone entering our house would not even know what we were going through because we made sure that the environment of the house was positive, happy. We spoke to him like we would otherwise. The only difference was he didn't answer back, but we assume that he absorbed everything that we said to him, our gestures, our expressions. We made sure that even if we were tired, we were smiling and happy in front of him. And I'm sure that did make a difference that he had a glow on his face after he breathed his last. ह्यूमर की बात की ईला ने, थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं। ह्यूमर की बात की कि इस किताब में कई ह्यूमरस तरीके से नितिमा जी ने, मंजीत जी ने अपनी बात को एक्सप्रेस किया है। जो इलाज का खर्चा उन्हें बताया गया था वो था 2 लाख रुपए टू बिगिन विद। तो उन्होंने लिखा approximately 2 lakhs of rupees to start with. I giggled. We had just about short less than 2,000 rupees with us, in person and in the bank. What a royal disease to nurture. So, the negligence of a dentist in diagnosing it earlier has brought me to a point where I have to sacrifice my tongue or maybe my life. Well, only 2 zeros more. That's it. Just 2 nondescript zeros to start with. What a weight this zero carries. I started singing this song of a Manoj Kumar film. जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई. I am getting insane or is this comical me? ऐसी सिचुएशन में भी वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और खुद ही अपनी सिचुएशन पे हंस रही थी. लेकिन जो जर्नी थी, अगर वो मुस्कुरा के उसे सब कुछ सह रही थी, उसमें कई कठिनाइयां भी आई उनको. सर्जरी हुई और जब वो सर्जरी के बाद उन्हें लगा वो कहाँ हैं, उन्हें उनके हस्बैंड की आवाज आने लगी. एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि शायद वो कहीं परी बन गई हैं और आसमान में चली गई हैं, बट इट वॉज फॉर रियल. शी हैड converted that 30% into 100%. And what was interesting is that she could speak. Dr. Dev was extremely happy, but he told her, don't speak until I ask you to do so. सर्जरी हो गई. अब बारी आई रेडिएशन थेरेपी की. वो तो एक अलग ही लेवल की तकलीफें थी, लेकिन जब सर्जरी भी होनी थी, सर्जरी इतनी आसानी से नहीं हुई थी. और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का डायलॉग जो हम सबने सुना है, वो सिर्फ कोर्ट कचहरी में नहीं होता है, अस्पतालों में भी होता है. चाहे कितनी से कितनी बड़ी आपको बीमारी हो, और वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख took that disease of hers to stage 3. सर्जरी हो गई, फिर रेडिएशन का टाइम आया. रेडिएशन इला नॉर्मली कहते हैं कि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन मंजीत जी के साथ, नितिमा जी के साथ क्या हुआ? कभी उनके मुंह पे ऐसी स्वेलिंग हुई कि उनके खुद के शब्दों में कि मैं एक ब्रिंजल जैसी लग रही थी. कभी उनके बॉडी पे पूरे रैशेस हुए. किस कदर तकलीफें उन्होंने सही. और एक हिस्सा है जिसको पढ़ के मैं और एकता दोनों बुरी तरह कांप गए, जिसे कहते हैं कि ईश्वर सारी परीक्षाएं एक साथ ले लेता है, आपकी बर्दाश्त की, आपके सब्र की, आपकी हिम्मत की. कि जब वो एक बार एडमिटेड थी रेडिएशन के लिए,
उनके पास वाले बेड पर एक मरीज लाया गया, जिसका जब घाव खुला तो उसमें से अनगिनत अनगिनत कीड़े निकलने लगे और वो हर जगह उस कमरे में फैल गए। आप सोच सकते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज को। एक स्वस्थ आदमी भी ऐसी जगह पे 2 मिनट रहना पसंद नहीं करेगा। वहां ये मजबूर बेड में पड़ी हुई हैं, बीमार हैं, और इनको लगा कि इनको वो सारे कीड़े नोचने खाने आ रहे हैं। वो सो नहीं पाई, उन्होंने बहुत मिन्नतें की, मुझे दूसरा रूम दे दो, मुझे कहीं और दे भेज दो, ये कीड़े मुझे खा जाएंगे। लेकिन जैसा कि सरकारी तंत्र में होता है, डॉक्टर्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन हम जिसको दोष देते हैं वो है सिस्टम को। अस्पताल का प्रशासन, सिस्टम उनकी बात नहीं मान रहा था। किंतु फिर से एक यंग डॉक्टर, शायद वो इंटर्न था, देवदूत बन के आया। उसने उसी वक्त रातों रात वहाँ के स्टाफ से लड़ाई करके उनके लिए एक अलग से रूम खाली करवा के उनको वहाँ शिफ्ट किया। तब जाके उनकी जान में जान आई। एक ऐसा लगता है जैसे एकता ने खुद कहा था कि जैसे खतरों के खिलाड़ी में हम देखते हैं कि आप वर्म्स निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, मेरे को झुरझुरी आ रही है बोलते हुए भी। जब मैं कितनी बार आंसू मेरे निकले होंगे और कितनी बार मैं हंसी भी होंगी। कैसे लिख पाई होंगी मंजीत जी ये कहानी, अपनी आप भी। हम पढ़ नहीं सक रहे हैं और वो उसमें से निकली है। एंड टू एड इट, जो वो घाव था उनके को पेशेंट पे, और वैसा ही एक घाव उन पे भी था, वो इसलिए था कि जब उनका रेडिएशन थेरेपी हो रही थी, she had third degree burns. बिकॉज ऑफ द Why रेडिएशन। did she have third degree burns? In radiation, when she used to go for her radiation, रेडिएशन के समय में मार्किंग की जाती है ताकि आप उसी एरिया में रेडिएशन करें, जैसा कि हमने कई सेशंस में सुना है डॉक्टर बंसल से। She was marked with a color. The first time the marking was dark blue. The second time it was light blue. And the third time also it was light blue. And one fine day, one of the doctors saw that and he immediately stopped the radiation because she had third degree burns. और उन्हें कई समय के लिए उसमें अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ा एंड हर रेडिएशन वाज स्टॉप्ड। किसी ने उनको देसी नुस्खे बताए कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और वहीं से ये जो जिसको पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, उसको उसके भी वूंड इसीलिए। में से कीड़े निकल रहे थे। और ऐसी कई नेग्लिजेंस हुई उनके ट्रीटमेंट में। कभी ब्लड टेस्ट करवाना डॉक्टर भूल गया, कभी मार्किंग गलत हो गई। इट वाज शी हु रेज्ड इट टू द डॉक्टर, टू द सीनियर डॉक्टर, दैट व्हेन आई हैड द डार्क ब्लू मार्किंग आई हैड minimal side effects, but when I had the light blue marking I had severe side effects. Do you think that this ink is not conducive to my body type and is reacting to radiation? The doctor immediately said, I think you are right. We will study this. And she was right, which also conveys, please do not take any treatment or anything that the doctor or the nurse will tell you without even blinking your eye. Be aware, be prepared, do your own study, take opinions, be sensible, be practical. Don't just be emotional about it. And as Ila said, if she was viewing some parts of it as an emotional person, I am looking at it from an analytical point of view. I remember when my father was in the hospital, as an attendant, I am within my rights to question the doctor. The first time when I did, I was shunned. आपको क्या समझ में आएगा?
आप डॉक्टर थोड़ी ना हैं. I said, okay. I didn't argue because I knew that my father is still in the hospital. And unfortunately, at that time, he was on the support system. And if I mess with the doctor, it's going to backfire. The next day, my brother reached. And while my brother was talking to the doctor, I was doing my research because I have always been medically inclined. और जो वो बोल रहे थे, I had a counter question. Within 5 minutes of conversation, his attitude, his tone changed, and he answered every question of mine. And all I told him was, why the difference? You think now I'm knowledgeable? His answer to that was, कई अटेंडेंट ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट्स के बारे में सोचते ही नहीं हैं, बस सवाल पे सवाल किए जाते हैं. I still am within my rights to ask. A doctor has to be a human. एंड मैं बार बार ये चीज कई बार बोल चुकी हूँ और आज फिर से बोलूंगी. Doctors like Dr. Indu Bansal, Dr. Suboi, Dr. Aditya, who had come on the World Cancer Day, actually redeem our faith Absolutely. in not just doctors plus humanity. And that, I think, would have made a huge difference in an early treatment of Nitima Babbar and many like her. But what really worked for her was, the only thing I was not confused about was my belief in him and my prayers. My strength was my determination to be with them till they stood on their feet and till they were ready to face the world on their own. She is referring to her sons. My strength was Deepak. Deepak, who her father chose for her. This hulk of a Taurian with broad shoulders and a will of a bull, I believed that he would not take me away from whom I love. I willed to live. Cancer or no cancer, I will survive. I will come out of this. From then onwards, my journey through the whole process was bemused. I never lost my faith, just prayed for strength to fight my case with our Father, our Creator, if my voice was not reaching Him, as I know I have sinned a lot. So I prayed to all the holy souls sent by Him to rescue us mortals and plead with them to join me in convincing the cosmos to take away the pains of His creation through His own self. I gave myself totally to Him and to my doctors. Their words were my command. She was in immense pain. इतना दर्द. आप जब ये किताब पढ़ेंगे, you will feel the pain. But her zeal to live, her enthusiasm, her faith, her conviction, she did not budge. She said, I will live, and I'm so glad that she is. And she is inspiring so many of us. There is so much to learn from this book, Ila. I have been a caretaker of a cancer patient, and I always say she did go because of cancer, because वो उनकी underlying problem थी. बट कहीं ना कहीं उन्होंने शुरू से अपनी विल को कमजोर किया था, और उसमें उनके डॉक्टर और उनके आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ था. आई विश द डॉक्टर्स हैंडल्ड हर more as a human than just a money making proposition. Absolutely. It is also one's good fortune that you come across good humans as your doctors. Not everyone is lucky. मेरी लाइफ में ऐसे ही जो एक डॉक्टर हैं लखनऊ में, आई डोंट इवन नो वेदर ही इज अलाइव एनी मोर और नॉट बिकॉज ही वॉज क्वाइट ओल्ड when we had our last meeting with him 24 years back. Dr. Chabra, a renowned neurosurgeon, उनके केबिन में, क्योंकि एस जी पी जी आई लखनऊ में थे हम, तो
उनके केबिन में पेशेंट को 5 से 6 मिनट नहीं मिलता था। वो देखते थे और अपनी टीम को बोलते थे अब इसके साथ ये कर दो। एंड उनके पूरी एक टीम ऑफ असिस्टेंट्स होती थी, डॉक्टर्स की, सर्जन्स की और फिजिशियंस की, जो पेशेंट को बाहर निकालते थे और बाद में उनके अटेंडेंट्स को कुछ बता देते थे। I was a young wife. I was hardly 32 years of age, and my husband couldn't speak, so he couldn't tell what went wrong, what are his problems. So it was up to me to talk to the doctor. And the doctors used to shoo me out, and I used to be ready with another question, and I used to barge in. And this is what impressed Dr. Chabra the most, that where most wives would be crying इन अ कॉर्नर, और उनके साथ जो आते हैं अटेंडेंट्स जो उनको लेकर आते हैं वो क्लूलेस होते हैं, सिर्फ वो वही करते हैं जो उनको बताया जाता है। यहाँ पे एक लड़की है जो आके क्वेश्चंस पूछ रही है बिना डरे, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ रही है। तो यहाँ पर अटेंडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल से ना लें ज्ञान, लेकिन अपनी रिसर्च करें और डरे नहीं। जब तक हम पीछे नहीं पड़ेंगे हमारे से कोई फैक्ट्स शेयर नहीं करेगा। मंजीत जी ने यहाँ पे एक चीज और लिखी है, और ये वैसे सर्वविदित है, सबको पता है ये बात, लेकिन उन्होंने यहाँ पर फिर से इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। मैं कुछ लाइंस पढ़ती हूँ। एज आर एल्डर्स से, इट इज टाइम लाइक दिस यू कम टू नो हु रियली केयर्स एंड हु इज जस्ट प्रिटेंडिंग। आई टू हैड अ रियलाइजेशन अबाउट इट। दिस वॉज द टाइम आई वॉज एबल टू डिफ्रेंशिएट ब्लैक फ्रॉम white. For me, there were no in between, no gray. I am thankful to him for the insight he gave me. I have no regrets whatsoever of finding out that the people I called mine, the people I went off my way to help, were indifferent and did not bother whether I lived or died. हमें मुश्किल वक्त में ही अपने लोगों की पहचान होती है। ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ आप हर सैटरडे संडे पार्टी करते हैं, या दिन में ऑफिस में दिन भर साथ रहते हैं, या रोज शाम की चाय साथ पीते हैं, हो सकता है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो वो आपके साथ ना आए। ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये किताब तो मतलब आई थिंक एवरी वन शुड हैव इट, बिकॉज so many facets to this book. It's not only about her journey or her fight with cancer, it is way and beyond. Yes. Some of the unforgettable moments that Neetima has shared, Neetima Manjeet, जो भी आप उनको उनके basically उनका नाम मंजीत था। जब उनकी शादी हुई तो as per ritual her name was changed to Neetima, so that is why Neetima is her post marriage name. So this one really touched my heart when Shivansh, her elder son, came to see me in the hospital during the RT days, the radiation therapy days, when I used to look like a Halloween pumpkin. He said, "You don't look like my mummy, but by your voice and your touch, I know you are my mummy." And now when he says, "Ma, will you marry me when I grow up?" The look on Love's face, their second son, when he met me for the first time after the operation and very quietly said, "Come back home soon." While she was preparing for the operation and there was scarcity of funds, she was working, and a colleague, a senior colleague of hers, his approval was needed to process the grant that she would get for the operation. There was no news from him for days together. She was shattered. The organization that she has worked for so long. But कहते हैं ना,
देर है पर अंधेर नहीं है. Things took a while, but they happened exactly the way she wanted it to. Today, she is healed. She is free of cancer. She does her online review with Dr. Dev, her God, her Shiva. She encourages many of us through her poetry and is trying her best to live a life of happiness with some dull, some sad moments. But a poem she reads, an article she reads, redeems her faith and she bounces back. And that, ladies and gentlemen, is Neetima Babbar. I always say that she is a rock star, a woman of substance, power, faith. Um, in her own words, I'm going to read out a few lines that she says in the end of her book. She also took some spiritual healing because she had to heal herself from within and not just her physical challenges that she had. When you have exhausted all possibilities, the only thing to keep in mind is you haven't. In the final analysis, the people who survive do so are those who have learned to react positively to their predicaments. They do not give up. They have faith in Him. They have trust in themselves. They have belief in others. What a powerful statement. The essence of the book, no matter what, believe in yourself. Believe in your own belief and faith. Believe in the people who are there to handhold you. Because only when you trust them, you believe them, you have faith. Of course, you have to be sensible to decide who to trust and who not to trust. But when you do it with utmost faith. Ila, I think in order to close the book reading, a poem from Manjeet's book, I'd like you to read that. Yes. So let's read about her poem During My Healing Days. All can hear the raindrops, music on their window panes. Quietly, gently, my dried up tears just tried to wash away my pains. Yes, it's hot, my body burns. So you sent to us the rain? Can I blame you? No, my dear. You gave me all. I do not fear. I can't ask for more again. Would be nice to take away my pain. Whatever I ask, you always gave. I know now I need to behave. You never expect nothing in return. Today I give to you my pain. ईश्वर से बात चल रही है कि आप कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन नहीं मांगते हैं तब भी मैं आपको अपना दर्द सौंप देना चाहती हूँ. कितनी सुंदर लाइन है. जब भी हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो हमें जितने भी गुरु हैं वो एक ही चीज बोलते हैं, टू सरेंडर. It's not about surrendering in hopelessness. It is about surrendering the situation to God. अपने हाथ खड़े नहीं करने हैं. हमें सिर्फ भगवान से ये कहना है कि हम आपके बच्चे हैं. आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है और आप ही हमें बाहर निकालेंगे. मैं भी तेरी, दर्द भी तेरा. इस किताब को पढ़ के मुझे नहीं लगता मैं बहुत दिन तक काम हो पाऊंगी. I come back with more strength.
more wisdom. What's your take on this book in totality, Ekta, before we close it today? Absolutely, Ila. I think this book is loud and clear that if we want to win, we have to believe. If we start the fight or the race with the thought कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो कभी नहीं होगा. And I have seen it firsthand. I have seen it secondhand. Hope is good, but hope without conviction leads to nothing. You have to have faith, but you can't be blind to the obvious. And the same thing was in Nitima's case also. There was pain, but there was acceptance. There was a phase she didn't want to see herself in the mirror because she knew that she just couldn't see herself. And that's where the love of her life said what I shared earlier. I don't love you for the way you look. I love you for the person that you are. Again, a very powerful and a strong message. One book with so many messages. And in her own words, she says that this book is not just about my struggle with cancer or my journey of recouping from cancer, but it is a book which is talking about a person's strength, what someone needs to do to live a life, and live a life like how. We urge each one of you to read this book, understand it as per your understanding, help Manjeet or Netima reach a cause that she is working for, because all the proceeds that she will collect from this book, by the sale of this book, will be used for charity. This is what Back to Life is all about. Nitima ji, thank you for giving us this opportunity. As a word of compliance, we seek permission from the reader, from the author, sorry, Sorry, to yes. share the book because this book is not fiction. This is real. There is a lot more than the book that we have understood about her through her poetry or through speaking to her and understanding her because she is also a member of Motherhood Club. We hope, Manjeet ji, we are able to do justice to the book. This book is going to be with me for keeps, and every time I lose hope or lose faith, this is my go to back to Exactly. life. And you know what? Just by holding it, I may not read it again, but even if I hold it, it will give me so much power and strength. So thank you so much, Manjeet ji, for this book, for this gift back to life. Thank you. Absolutely. And thank you, everyone. There is an influx of comments. Um, I know we have not read any of the comments that we normally do, but thank you so much. I've been glancing through the comments where you've spoken about the color of the cover of the book, talking about doctors, talking about your own experiences. Um Manjiji, thank you so much. She is watching the session on YouTube, and she says, "I am honored and hope it helps the humanity and give strength to one who needs." Thank you, everyone, for an overwhelming response to the maiden episode of the book reading session. We hope that books that will come every month will add value to each one of us in some way or the other. It is not necessary that the book has to be very, very intense.
or it has to be a real story. It can be fiction, it could be even an anthology of poetries or stories, but a book which will add value to each one of us. That's all from Absolutely. my side. I'm so looking forward to our next poetry reading session, because then we would be amongst the Book audiences or reading. viewers. Yes, Book book reading. reading session. Yes. एंड वहाँ हम लोग फिर ऑडियंस में से होंगे, व्यूअर्स में से होंगे, एंड इट वुड बी सच अ प्लेजर टू हियर देम रीड द बुक. सो ऑल ऑफ आर लवली मेंबर्स हु हैव जॉइंड अस नाउ, और जितने भी लोग अभी हमें बाद में इसको देखेंगे सेशन को, प्लीज कम फॉरवर्ड with your set of books, share the books with us, read them to us, and let's continue this journey into the world of books. Thank you all. Yes, and we started the month by creating hope. We are pretty much at the end of the February, and yet again, hope, hope, and hope. And for all of us to be stronger, and for all of us to do one thing for sure in our life, be it a man, woman, or anyone, break the bias. Let's all fight our own inhibitions, our own challenges. Do share your thoughts on break the bias with a picture in this posture. It's an aggressive posture बहुत because aggressive है. we are Break the technically bias. blocking, but Yes. at the same time, what we are trying to convey is enough is enough. We are looking forward to your pictures with your views on a bias that you wish to challenge or a bias that you have overcome. Also, we would request each one of you to share a video talking about that particular bias. How did you overcome it, or how you intend to? Flood Motherhood Club with your thoughts and views till 5th of March, and let the world know enough is enough. Women supporting women and men supporting women. That's the only way we all can actually work towards an inclusive society. And I Absolutely. wish and hope that each one of you will support and come forward and do something for each one of us. Thank you so much, everyone. And stay safe, take care. Don't forget to wear the mask. We are still not out of the danger. We have to be careful. And thank you so much for participating, being here today. We will read all the beautiful comments that have come. And dil se sabhi ka abhar. सबको शुक्रिया. And thank you, Ekta, Thank you for so much, this Ida, reading. for thank you Thank you. so much for being with me on this book. Thank you. Totally. Take care, everyone. Bye. Bye bye.